student, myself Devadrao Nitin Vasantrao. Today we are going to discuss about experiment number 2 of physical pharmaceutics 1. Aim of the experiment is determination of partition coefficient of benzoic acid in benzene and water. Requirement of glassware is separating funnel, beaker, funnel, measuring cylinder, burette and pipette. Chemical of experiment: sodium hydroxide NaOH, 0.1 normal NaOH and 0.01 normal NaOH, then benzoic acid, then phenolphthalein indicator, and then benzene. Okay, then prepare 110 ml of benzoic acid solution or stock solution of benzoic acid in benzene. See here in the table 4 separate bottle A, B, C, D. Okay, then take 50 ml water. Firstly we prepare stock solution of benzoic acid and benzene. Okay, then take 40 ml of stock solution from that solution and 10 ml benzene, total 100 ml. Then another second bottle B, 50 ml water, 30 ml stock solution and 20 ml benzene. And third bottle 50 ml water, 2 ml stock solution, 30 ml benzene. And next fourth number bottle D, 50 ml water, 10 ml stock solution and 40 ml benzene. Okay, आपको क्या करना है, 4 सेपरेटिंग फनल लेना है और बीकर लेना है, जो भी है A, B, C, ऐसे 4 सेपरेटिंग फनल और बीकर और वाटर जो भी है आप ले सकते हो. उसमें 50 ml वाटर और डिस्टिल वाटर. ओके, देन जो आपने 110 ml जो बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन बनाया बेंजीन में, उसका जो स्टॉक सॉल्यूशन है, वो स्टॉक सॉल्यूशन में से 40 ml ऑफ सॉल्यूशन. ओके, देन 10 ml बेंजीन, टोटल कुल मिला के हो गया 100. ओके, देन सेकंड बॉटल 50 ml वाटर, डिस्टिल वाटर, 30 ml स्टॉक सॉल्यूशन फ्रॉम दैट सॉल्यूशन, स्टॉक सॉल्यूशन और 20 ml बेंजीन. Then second bottle, then third bottle 50 ml water, 20 ml stock solution and 30 ml benzene. Then fourth number bottle, that is the D. Okay, 50 ml, 10 ml and 40 ml. Okay, okay, see here in the figure A, B, C, D, 4 separating funnel. ओके, इस पे आपको क्या करना है, ये जो सॉल्यूशन है ए में डालना है, बी, सी एंड डी. इसमें आपको क्या मिलेगा, एक एक्वियस फेज और एक ऑर्गेनिक फेज मिलेगा. वो आपको इसमें डालने के बाद इसको सेपरेट आउट करना है बाद में. इसमें जो सॉल्यूशन है 50 ml, 40 ml एंड 10 ml. इसमें जो है 50 ml, 30 ml, 20 ml. Then third number 50, 20, 30 and then fourth 50, 10 and 40 ml. जब आपको इसको फिल्टर करना है तो जो आप एक्वियस लेयर और ऑर्गेनिक लेयर आपको अलग अलग 2 बीकर में सेपरेट आउट करना है. तो यहाँ पे 2 बीकर लगेंगे आपको, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी एक्वियस और ऑर्गेनिक फेज है. सेम एक्वियस ऑर्गेनिक, यहाँ पे भी 2 बीकर लगेंगे. सेम हियर aqueous and organic phase, aqueous phase, organic phase. ओके, आपको सेपरेट करना है. सेपरेट करने के बाद उसको टाइट्रेट करना है. See here, separate 2 beakers, aqueous layer and organic layer. Okay, then take 10 ml aqueous layer from that solution. Okay, 10 ml of aqueous solution and titrate with
0.01 normal NaOH. And then second one is organic phase. Take 10 ml of solution. From that solution is titrate with 0.1 normal NaOH solution. See here in the experiment, prepare following mixture in 4 separate reagent bottle and label them as A, B, C and D. Okay, 4 separating funnel here. ट्रांसफर ये देखो यहाँ पे सेपरेट आपको लेयर दिख रहा है इसमें, ऑर्गेनिक लेयर एंड एक्वियस लेयर. Okay, here again B solution, then C solution and D here. See here, 2 layer, aqueous layer and organic layer. Place the stopper on each bottle and shake them for 30 minutes. Okay, 30 minutes for bottle for better and reproducible result. Effective shaking is must. Okay, then transfer this mixture in separating funnel labeled as A, B, C, D and allow them to stand for 10 minutes to separate the layer. Collect separated organic and aqueous layer in dry beaker. As like इसमें आपको एक्वियस लेयर और ऑर्गेनिक लेयर सेपरेट करना है. स्टॉप यहाँ पे स्टॉपर दिया है, ये स्टॉपर यूज़ करके आपको सेपरेट निकालना है. ओके, देन आफ्टर सेपरेशन टेक 10 ml ऑफ एक्वियस लेयर. मीन्स जो वाटर लेयर है, जो आपको लेना है, जो वाटरी है उसको लेना है 10 ml aqueous layer, 10 ml of aqueous layer and titrate against 0.01 normal NaOH using 2 to 3 drops of phenolphthalein as an indicator. Here collect separated organic layer and aqueous layer in a separate dry beaker. This is the aqueous layer, okay, and this is the organic layer in the separating funnel. Okay, separate out organic layer in a separate beaker. Here aqueous layer and organic layer separate in the separate dry beaker. Okay, see here aqueous layer titrate with 0.01 normal NaOH and organic layer titrate with 0.1 normal NaOH. See here in the burette 0.1 normal NaOH and 0.01 normal NaOH. See here, pipette out 10 ml of organic layer and transfer to a dry conical flask using dry pipette. Titrate this solution against 0.1 normal NaOH solution using 2 to 3 drops of phenolphthalein as an indicator. The endpoint is detected as appearance of pink color. Let the titer reading be V organic. Then second one, pipette out
10 ml of aqueous layer and titrate against 0.01 normal sodium hydroxide solution using phenolphthalein as an indicator, and then titrate with 0.01 normal NaOH solution. See here, end point of the aqueous solution, pink color, lets the titer reading be V aqueous. See here, bottle number or reagent bottle number A, B, C, D. VR is the volume of 0.1 normal sodium hydroxide per 10 ml of organic layer. Then V aqueous, volume of 0.01 normal sodium hydroxide per 10 ml of aqueous layer. Then N organic means the normality of organic layer, then normality of aqueous layer. Then C organic, concentration of benzoic acid in organic layer, gram mole per liter. Okay, then C aqueous, concentration of benzoic acid in aqueous layer, gram mole per liter. Then K is the partition coefficient of benzoic acid. Put the all readings in V organic, V aqueous, normality of organic solution, normality of aqueous solution, then concentration of organic, then concentration of aqueous layer, and finally get the result. Okay, then thank you. Then repeat the step 6 and 7 for all remaining 3 solutions. Okay.